Hello, dear students. How are you? Hope you are doing good. Everyone, welcome GNV. Welcome Wangtoi. How are you? Good afternoon to everyone. We will wait for 1-2 minutes more and then we will start the session. Okay? Meanwhile, you can ask me the doubts related to the previous topic that we have discussed in the previous lecture. So, Wangtoi, Khanem Bum. Any kind of doubt you have in the previous topic? Welcome GNV KK. How are you? Okay, to response, you can use the chat box here or you can also respond with the reactions. Okay. Make sure that my voice is audible to you and I'm visible to you and the screen is also visible. JNV, could you please write up your name? Like which JNV you are or what is your name? Three of you guys write your name with your respective JNV in the chat box. JNV drawing. Good. Uh, Make sure the screen is visible to all. JNV drawing. Is it visible? Wangtoi JNV KK. Okay. And I am also audible, है ना? I'm considering that. Hello, Yampar me. How are you? So we will start the topic for today class. Are you ready, guys? Sanket is also here. Okay. You have promised me that you will respond to my queries. Okay. So it's your responsibility to respond. So I'm going to ask you that let me launch a poll for that. Very easy. Response in the poll and then we will start the session. Okay. So I'm audible also and I'm visible. Okay.
Yeah, definitely. Course is for 2 years, and not exactly 2 years. In 2 years, you can count February to February. So now September to February, even October, because अब तो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन है. So October to February, and then February to December, you can say. Got it? That's not exactly 2 years. Less time. Okay. Okay. So welcome you guys in this session of Enable Plus program of 11th class. And the topic that we have started in the previous class is motion in straight line. Now, in advancement to that topic, what is the topic for today's class that we are going to learn is first is the different cases for average velocity we will be seeing. In the previous lecture, we have seen what is average velocity. Okay. So this we have seen in the like average velocity ka definition and what is average velocity and how to calculate it. Average speed also we have calculated in the previous session. In this session, we will going to discuss some new cases of some different cases situations of average velocity that could be possibly come into the examination. The next thing that we are going to discuss is the general equation of motion. Okay. These equation you can apply any type of motion that is given to you. No matters what are the conditions, what are the situations. These general equation of motion you can apply anywhere. Okay. But when we derive some special kind of equation of motion that is mentioned in this in terms of UAM, which is uniformly accelerated motion. So this is a special case of this general equation of motion, and we will be discussing about that. Okay. So the very first thing that we are going to discuss today is the different cases of average speed. So the first case here, let me brief you with the figure that you are seeing right now. So here this is the object. Okay. This particular objects move from here to here at x is equals to 0 to at x is equals to x1 in t time, and then again from x1 to x2 in t time, which means we can say the time taken is same for different distances. So ultimately velocities will be different also, will be different. So that is why it will cover the distance x is equals to 0 to x is equals to x1 with a speed v1, and next distance is covered in speed with velocity, sorry, v2. ठीक है? Clear है सभी को? So figure is easy to understand, है ना? So when time taken is same for different distances. तो एक object है हमारे पास which is traveling for x1 and x2, two different segment of distance in same time. The time taken to cover x1 is also t, and to time taken to cover x2 is also t. ठीक है? But the velocities are also different. Then in this case, what is the average speed or what is the average velocity we will see? So we will specifically talk about the average velocity, and since it is a straight line motion and the particle is not taking any turn, so in this case the velocity and speed will be same. Okay. So to calculate average velocity, what we will do? It is the total displacement upon what? Total time taken. Total time taken. Okay, we have to find out this value of average velocity in terms of v1 and v2 only. Okay. So v average वेक्टर मैंने लगा दिया ताकि आपको पता रहे कि दिस इज एवरेज वेलोसिटी. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t प्लस t. ठीक है भाई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x1 टू x2, फाइनल पोजीशन इज x2, इनिशियल पोजीशन इज x1 हियर.
यहाँ 0, ठीक है। तो x1 प्लस x2 इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज हैज कवर्ड। क्लियर है? नाउ x1 plus x2 divided by 2 times of t, we can write that. There is no problem in that case. Now if we define, this is equation number 1. Now v1 को अगर मैं डिफाइन करूं, v1 वेक्टर यानी कि v1 इज द वेलोसिटी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम x is equals to 0 to x is equals to x1. तो x1 is the total displacement and time taken is small t. By small t time में this object reaches x1 position with a velocity v1. And similarly, if I write v2, so it will be x2 by t. Distance it has covered from here to here is x2, from this point to this point, x2 in time t, so x2 by t. Now from this position or from this equation you can find out, like take v average, just distribute this 1 by 2, take this 1 by 2 outside, and you can write it as x1 by t and x2 by t. Clear? Now x1 by t and x2 by t को simply we can write what? v1 and v2. So it is 1 by 2 times v1 vector plus v2. So you can say that velocity average here is the v1 plus v2 vector divided by, okay, note it down. So here you can say that the velocity, the average velocity is the arithmetic mean of other velocities. है ना? गुड आफ्टरनून श्री लक्ष्मी, हाउ आर यू? सो सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस केस में? एवरीवन, इज इट क्लियर? Is it clear to everybody? Say yes and no in the chat box rapidly. Okay. We can apply this equation to multiple velocities also. Suppose in there, if there is a motion जहाँ पे ये ब्लॉक x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 से, देन अगेन x2 कर रहा है v2 वेलोसिटी से, एंड देन अगेन x3 distance covered by v3 velocity, and so on and on. But the time taken is always same, t time. So in that case also you can say that v average is nothing but v1 plus v2 plus v3 plus up to n divided by n. ठीक है? If there are n velocities. क्लियर है? यहाँ पे दो वेलोसिटीज थी तो हमने ले लिया 2. अगर n वेलोसिटीज होगी तो डिवाइडेड बाई n. क्लियर है? Only one student is responding. What is the problem with you guys? Why are you not responding? Say if it's clear to you. You just have to write yes and no. That what I'm asking you. How would I know कि आपको समझ में आया कि नहीं है? ठीक है? Only JNV भावनगर has responded, and there is around 17, 18 guys is here. ठीक है? Do not do that. ठीक है? This is for you, not for me. Clear है? Okay, JNV Rowing has answered. What about you, JNV KK, Sri Lakshmi, and the other participants? Bindu is also here. लिखिता, मान्या. अरे पिछली क्लास में तो आप अनम्यूट कर करके आंसर दे रहे थे यार. ऐसा मत करो भाई. आंसर दो. अनम्यूट करके बोल दो चाहे. इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है? क्लियर क्लियर.
वो ऐसा मत करो कि मुझे बोलना पड़े तभी आप रेस्पॉन्स करोगे। ओरिएंटेशन के टाइम में व्हाट द थिंग दैट आई हैव आस्क्ड यू, डोंट हेजिटेट टू आस्क एंड क्लियर रेस्पॉन्सेस यू। ठीक है, रेस्पॉन्सिव इन द क्लास। Sir, ओके, या sir, हाँ हाँ बताइए। sir, can you please repeat? रिपीट? कहाँ से रिपीट करूँ बताओ? Sir, I didn't get the point where. यम पर में, योर नेम इज यम पर में ना? Yes, sir. फ्रॉम वेयर यू हैव प्रॉब्लम, फ्रॉम हियर और हियर? Yes, sir, from there. मैं सारा रिपीट करता हूँ, ठीक है ना? देखो, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? Yes. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले ये x1 चला, उसके बाद x2 चला। ठीक है, 0 to x1 देन x1 to x2। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 प्लस x2। दिस इज x1, दिस इज x2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2। क्लियर है? अब x1 को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, t। x2 को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, t। तो t प्लस टी इज द टोटल टाइम। t प्लस टी विल बिकम 2t। अब मैंने 1/2 को क्या रख लिया, बाहर रख लिया। x1 इज डिवाइडेड बाई टी, x1/t, x2 इज डिवाइडेड बाई टी, x2/t। ठीक है, clearly we can see that for velocity v1, if I want to write velocity v1, how can I write? Velocity v1 is the displacement by this velocity। कितना डिस्प्लेस किया इसने, x1, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, t। तो x1/t is the v1, similarly x2/t is the v2। you can apply the vector sign here also। अब x1/t और x2/t की वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी, v1 एंड v2। तो सिमिलरली v एवरेज वी कैन से v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2। Now I am saying that if there are n velocities, but the condition is same, time taken is same for all the for all the velocities or all the distances. So you can apply this formula, you can extend this formula up to n। ठीक है, कितने भी number of velocities is given to you, just divided by the number of velocities। Suppose 4 velocities is given, so v1 plus v2 plus v3 plus v4 divided by 4। Clear? Now it's clear to you, yum per me? Yes, sir. Yes, sir. I got it. ठीक। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन के बारे में। When time taken is different but the distance traveled is same, now reverse the situation। ठीक है, now time is different, distance is same। So again you can also solve it। v average is what, total displacement by total time taken। नोट कर लेना ये सब। Are you noting it down everyone? Are you noting it down? Total displacement is what, x plus x, this is x, this is also x, divided by total time taken is t1 plus t2। Now what we can do, this is equation number 1। अच्छा ठीक है, जिस भी नोटबुक में नोट करते हो ना, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, आई विल ऐड यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू हैव टू सेंड मी वेयर यू हैव नोटेड डाउन। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे वी कैन also have this velocity, average velocity expression in terms of v1 and v2। So to make this expression in terms of v1 and v2, we have to replace this x1 and t1 here। ठीक है, so clearly see here, v1 vector we can write x upon t1 and v2 vector we can write x upon t2। No problem in that case। Now if I write t1 is equals to x upon v1 and t2 is equals to x upon v2, is there any problem to anyone? किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होगी ना? Now put these values, put it in equation 1।
तो हम इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब, तो क्या बनेगा, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x अपॉन v1 plus x upon v2. Now we can take x as common, and in the upper side also it will become 2x vector divided by x vector 1 upon v1 plus 1 upon v2. कहीं पे अगर मैं वेक्टर साइन मिस कर जाऊं तो you can apply it by this, and this will cancel out. So v average we can say is 1 upon v1 plus 1 upon v2. Or for these two velocities we can simplify it as there is 2 also, na, 2 also. For this velocity we can simplify it at 2v1 v2 by v1 plus v. ठीक है, क्लियर है. Now here we can say the average velocity in this case is the हार्मोनिक मीन. इस मीन को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन. ऑलवेज रिमेंबर, हार्मोनिक मीन. अब अगर यहीं पे मल्टीपल वेलोसिटी आ जाए तो क्या करेंगे, v एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. ये हो जाएगा, अगर n वेलोसिटीज है तो n अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस 1 अपॉन v4 एंड अपस्टोर. ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, जेएनवी भावनगर. यस, जेएनवी भावनगर, इट्स हार्मोनिक मीन. यम पर में एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है, एवरीवन एंड द अदर स्टूडेंट आल्सो कैन अनम्यूट देयर सेल्फ एंड देन आस्क. ठीक है, क्लियर है. इतनी प्यारी आवाज है आप लोगों की, बताया करो ना बोल करके. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, सभी को कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रीवियस केस देख लेते हैं एक बार. देखो, प्रीवियस केस में टाइम डिफरेंट, टाइम सेम था, डिस्टेंसेस डिफरेंट थी. तो उसमें मेरा जो वेलोसिटी आई क्या आई, सिंपल है, अर्थमेटिक मीन है. वेलोसिटी जोड़ दो, नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दो. इन दिस केस when time taken is different but the distance traveled is same, so in this case you just have to inverse the velocity and then add. ठीक है, नंबर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनवर्स ऑफ वेलोसिटी एडिशन. तो यही हो रहा है यहाँ पे, देखो. ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं दिस सिचुएशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेलोसिटी v1, और हाँ, एक one more important thing that you can note it down from there is average velocity in these two cases. Only in these two cases average velocity is equals to average speed. So from the same formula you can calculate the average speed also. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेलोसिटी v1 एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट विद वेलोसिटी v2. ठीक है, तो कैसे मोशन रहा होगा, दिस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लाइक दिस, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, and then again it moves with a different velocity and reach to the same position. Now in this case, if I just ask you what is the average velocity, who is going to answer? Average velocity is what? Total displacement divided by total time taken. अब बताओ, what is total displacement in this case? ये x is equals to 0 से x is equals to x naught is the first distance, and after returning back it travels the same distance, x naught. So what will be the displacement? Displacement is what? Final position minus initial position. And in this situation, it comes to the same position.
So final and initial position are same. So the difference will become what? Zero. Very good to all of you, those who are responding. That average displacement or the total displacement is zero divided by total time taken. Let's say t1 plus t2. बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, टाइम डिफरेंट है, अलग अलग वेलोसिटीज आ रहा है तो टाइम विल बी डिफरेंट डेफिनेटली. तो t1 plus t2 इज द टाइम, बट इट इज जीरो. तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर से आई एम रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. लेट मी राइट इट एट दिस. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड अब बताओ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड में ये वाला केस है या ये वाला केस? बताओ. केस वन इज देयर और केस टू इज देयर इन केस थ्री. What situation you will apply? यम पर में, कैन यू से? श्रीनिधि, जेएनवी भावनगर, बिंदु, स्नेहा. ठीक है. देखो वैसे जंपिंग मेथड से तो हम कर ही सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, बट आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द केस इन द प्रीवियस केस दैट वी हैव लर्न. उससे कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? इट समथिंग इज मैचिंग फ्रॉम द प्रीवियस केसेस और नॉट? वेरी गुड. इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम. अब देखो इस केस में क्या पढ़ा था? टाइम टेकन इज डिफरेंट बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम. So we can apply the same formula. V1 and V2 are the two velocities. So average speed will be 2v1 v2 by v1 plus. क्लियर है? ये इतना होनहार जवाब किसने दिया है भाई? इक्वल डिस्टेंस वाला जेएनवी भावनगर. वेरी गुड. फोड़ रहे हो आप लोग भाई. जेएनवी भावनगर स्टूडेंट्स ट्रेमेंडसली गुड. वेरी गुड. Not v1 plus v2. It's 2v1 v2 by v1 plus v2. Velocity average speed will be the harmonic mean of the speeds. ठीक है? क्लियर है? अब इन तीनों केसेस पे आपको कोई डाउट है? तीनों केसेस में कोई डाउट है? बताओ. अगर डाउट नहीं है तो वी विल मूव फर्दर. ठीक है. नाउ द टर्म फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेरी जनरल. यू कैन अप्लाई इट एट एनीवेयर, वट एवर द काइंड ऑफ मोशन इज. अब देखो अप्लाई कहाँ से करना है इसे. ठीक है. ये तो पढ़ लिया कि कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव स्टडीड दैट वी कैन अप्लाई इट एनीवेयर. Either the motion is accelerated or non-accelerated or uniformly accelerated or non-uniformly accelerated. Okay. So firstly, we will just understood what is this uniformly accelerated motion and what is this non-uniformly accelerated motion. Okay. Okay. Delta S by delta. Clear है. चलिए. अब देखो मेरे पास दो तरह के मोशन. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. Uniform motion is what? In which velocity is constant. Velocity is constant, always remember. And when we are saying that velocity is constant, which means the direction of the velocity must also be in the same direction throughout the journey. If the direction is changing, then you cannot say that this motion is uniform. Okay? So velocity is uniform or constant. If the velocity is constant, then acceleration must be zero. Because acceleration is what? Acceleration, the change in velocity. Now, non-uniform motion itself has two types. But the base of this, that the acceleration is present. Now
if acceleration is constant and if acceleration is not constant. Okay, these are the two. In this way, if acceleration is constant, this motion is termed as uniformly accelerated motion. But in this case, it will termed as non-uniformly accelerated motion. Okay, clear? So these two situations you must remember, that acceleration is constant and acceleration is not constant. Clear? So we can apply this general equation of motion to any of the motion, either it is uniform motion, not constant, non-uniform accelerated motion, or uniformly accelerated. Because why we can do so? Why we can do so? Because these equation na is applying for a very small distances, very small velocities, very small distance or displacement, very small velocities. So if the velocity is, let's say, changing, suppose v is varies at time as v is equals to 3t. So at t is equals to 0, what is the velocity? 0. Clear? At t is equals to 1 second, what is the velocity? 3 meter per second. Okay. But if you calculate the velocity at t is equals to 1.000001. So at that time, what is the velocity? Can you say that velocity is approximately 3 meter per second? Everyone, make a response. Can you say for time t is equals to 1.00001 second, velocity can be approximated as 3 meter per second? Approximately. Okay. But you can see here that velocity is not uniform. Okay. But for a very small change, we can assume the velocity to be uniform. In similar way, if acceleration is also there, we can also assume that acceleration is also uniform for very small time interval. Okay. Clear? So that is why these equations are applied to all the cases, because these equations involve very small time interval, very small distances, or very small velocity difference. ठीक है? अब देखो, you are do not have to worry that how this equation arises. It's very simple. That instantaneous velocity is what? Dx by dt. Simply take this v dt, that dx is equals to v dt. Just integrate it. At t is equals to 0, let's say the displacement is x naught. At t is equals to t, that displacement is x, or the position is x. Okay? So we can do the same for here also. X naught to x at times t is equals to 0 to t is equals to t. Similarly, for time t is equals to 0, the velocity, initial velocity, we generally assume u, and for time t is equals to t second, the velocity will be, final velocity is. Here also, when the displacement is x naught, at that time, initial velocity is u. When the displacement is, or the position is x, the final velocity would be what? So these are the limits you can apply. Okay. Now, the third equation, if you are having doubt that how we are having this third equation, let me do it for you also here. Dekho. We know that acceleration is nothing but dv by dt. Clear है सभी को? If I multiply with ds and divide by ds in the right hand side, what is this expression look like? Ds by ds. Now,
take this ds and dt together. So we can say this will become dv by ds into ds by dt. Now ds by dt is what? Velocity, change in displacement divided by time is the velocity. So we can say that a is equals to dv by ds into v. So we can take this ds here. So it will become a ds is equals to v dv. So from here this equation arrives. ठीक है? किसी को कोई डाउट है? Anyone any kind of doubt in this? Everyone, is it clear to everyone? Okay, very good, very good. चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस. ठीक है, आई show you ki where you can apply this general equation of motion. We will have, can we also write, Milan is asking, can we also write ds as dx? Yes, you can write. You can write. You can write ds as dx. There is no problem. So equation of motion we will going to derive for uniformly accelerated motion. ठीक है, तो पहले मैं एक आपको इक्वेशन बता देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशन है, एंड देन वी विल डिराइव. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सब सिमिलर सिमिलर होंगे इन सबसे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू एटी स्क्वायर, एंड v square is equals to u square plus 2as. These three equation we have to derive, but we will going to derive these equation with the help of differentiation. ठीक है, देखो, with the help of general equation of motion. तो पहली इक्वेशन उठाओ, सॉरी, सबसे पहले पहली इक्वेशन डिराइव करनी है, तो ये वाली इक्वेशन उठाओ, v dt वाली. इसमें क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है. तो जनरल इक्वेशन में कौन सी ऐसी इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है और टाइम भी है? तो ये है dv is equals to a dt. So by general equation of motion, we can say integration of dv is equals to integration of a dt. At time t is 0, the velocity is, initial velocity is u. At time t, the final velocity is v. So what is the integration of dv? I have told you. यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx गिव्स यू x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dv गिव्स यू व्हाट? v, and the limits are u and v. Similarly, integration of a dt, a is a constant quantity because this is uniformly accelerated motion. So acceleration here is what? Constant. ठीक है, so we can take acceleration outside, and then again integration of dt, integration of dx is x. So integration of dt is what? T, a t 0 to t. So this will become v minus u is equals to a into t, and you can write it as v is equals to u plus at. So this is the first equation. क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस? एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, सेकंड. तो इसमें देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन. ऐसी कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, टाइम? तो दिस फर्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है, सो सेकेंडली, सेकेंड इक्वेशन के लिए बाय जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सी इक्वेशन? dx इज इक्वल टू v dt. अब यहां पे आपको ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट हियर.
पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहां से v की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, सो इट विल बिकम u प्लस 80 इंटू dt. ठीक है. नाउ when time t is equals to 0, let the particle is situated at x naught. तो पार्टिकल की जो पोजीशन है t is equals to 0 पे x naught, and at time t particle displace itself at position x. So integration of dx will become what? X. So we can say it is integration x x naught to x. Okay, these are the limits. Now we can distribute this integration in this multiplication also. So we can write 0 to t u dt plus 0 to t a t dt. ठीक है, क्लियर है. अब देखो, u is also constant which is the initial velocity. Initial velocity is constant. ठीक है. So again it is a situation like this, a dt u dt will become u into t plus acceleration is constant, so you can taken it out. Now integration of t dt will become, जैसे integration of x dx is what? X square by 2. I have told you in the very first class and the formula also, and I have said that in that class that we are going to use this formula. ठीक है, क्लियर है सभी को. तो यहाँ पे a I taken common out, so it will become t square by 2, and limits are 0 to t. And here also when you put the limit it will become x. So this is the final position, this is initial position. We can say that final minus initial position is nothing but the displacement s. So it will become s is equals to ut plus 1 by 2 at square. This is the second equation. क्लियर है. बताओ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एनी वन एन को किसी को डाउट है? एनी वन एनी काइंड ऑफ डाउट? मिलन, यम परमे, जेएनवी भावनगर, बिंदु, लिखिता, श्रीनिधि, श्रीलक्ष्मी, वे सबका मुझे नाम लेना पड़ता है बार. शिवानंद पाटिल को कोई डाउट नहीं. एवरीवन को मुझे हर बार ही बुलाना पड़ता है नाम ले लेकर. दिस इज नॉट गुड यार. जैसे ही मैं पूछूं कि इज इट क्लियर टू एवरीवन, टाइप यस एंड नो और अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन से. पिछली 2 क्लासेस से मैं यही बात बता रहा हूँ. चलो ठीक है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं. We will move to the next topic. Our next equation, which is third equation, is what? V square is equals to u square plus 2as, and for which we are going to use by general equation of motion. General equation of motion, integration of v dv, ये वाली. ठीक है. और इसमें भी हम अभी वी आर कैलकुलेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना, तो वी टेक इट एज एक्स. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस ऑल्सो. ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू टेक द डिस्प्लेसमेंट 0 to s, but in this case we will take x naught to x, क्योंकि difference of x minus x naught is s only. ठीक है. So when displacement is x naught at that time, means at the initial position, the velocity is also initial, which is u, and at the final position, let's say x, the final velocity is v. Now again it is the same case, integration of t dt, and here we have integration of v dv, so it will become v square by 2, limits are u to b, and this is nothing but ax minus x naught. So this will become v square minus u square by is equals to a into s, because this x minus x naught is nothing but s.
So v square is equals to u square plus 2as. Initially we multiply this 2, then we take this u square on right hand side. So this is the third equation. ठीक है, क्लियर है सभी को? Everyone, is it Yes, clear sir. to everybody? Okay. Yam Parme is the only attentive or only responsive student in the class who is unmuting yourself, and the internet connection at their side na is not so good. In that case also she is unmuting herself and then saying yes and no, and if any doubt occurs also she is definitely going to ask it. I am confident about it. So these types of confidence I expect from each and everyone that is present. ठीक है, ओके, वेरी गुड, सभी को क्लियर है? चलिए, so in this equation na, the second one, this equation gives us displacement, not distance. Distance भी देगी, but how to calculate that distance, this is also a question. पहले इसी के बारे में बात करते हैं. देखो, एक सिचुएशन में मैं लेके चलता हूँ दैट इनिशियल वेलोसिटी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड. माइनस मीन्स इट इज रिटार्डिंग. ठीक है, brakes are applied, but you can say the velocity is positive here, but the acceleration is negative. It is a motion like you're going in this direction and somebody is pulling you behind. So it is, whenever you move you apply your full potential, but at the point you have to move back according to the acceleration. Okay, so at t is equals to 5 seconds and at t is equals to 6 seconds, find distance and displacement. Some people were thinking that this question is very easy. I'll tell you, this question is not easy. So initially, if you directly apply the equation, because here acceleration is uniform, although it is negative, but it is uniform. Okay. So to calculate distance or displacement, you apply S is equals to ut 1 by 2 at square. Putting the value, u is 5, time is 5, minus 1 by 2 because acceleration is minus, so I have taken it in the front side, minus t square is 25. It will become 25 minus 25 by 2, which is 25 by, results in 12.5 meter. ठीक है, 4 t is equals to 6 seconds. And similar way में you are going to calculate the distance also. ठीक है, ut plus 1 by 2 at square for 6 seconds. S6, this is S5. So apply, put the value 5 into 6 minus 1 by 2, 1 into 6 square. So it will give you 30 minus 18, which is 12 meter. S6. And similar way में you are going to apply for distance also, because there is no other equation separately for distance. बताओ, है कोई separate equation? नहीं है ना? So similar way में you are going to apply this equation. You are forced to apply this equation. But you can clearly see कि 5 सेकंड में तो 12.5 मीटर जा रहा है एंड 6 सेकंड टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये तो कम हो गया. इट इज डिक्रीजिंग. इट इज एक्चुअली 12 मीटर, नॉट मीटर पर सेकंड, 12 meter only. But we have studied that distance
is always greater than displacement, which means something is missing here, na? And that is why I'm saying that this particular equation gives you the value of displacement only. Clear? So how to calculate distance in these cases? So first of all, you have to find out the time where the velocity will become zero, because this acceleration is decreasing the velocity. Okay? So you have to find out the time first of all where the velocity is becoming zero, because this motion is like this. Initially it is going in this line, and when velocity will become, it moves to the opposite direction. Okay? So at this point, देखो, यहां से यहां तक you are able to calculate distance and displacement because they are same. But when it moves back, the distance will increases, but the displacement decreases. देखो, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कैसे. सो u इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड. Acceleration is minus 1 meter per second square. Now find out where the velocity will become zero. So apply this equation, v is equals to u plus at. If both are equal, genuine drawing, if both are equal, then what is forcing you to recognize distance and displacement? If both are equal. If both are equal, then the velocity and speed is also same. ठीक है? So in that case, do not need to recognize it. You have to recognize in this case only. ठीक है? Clear है? चलो. So velocity will become zero at what time? So it is 0, u is 5 minus 1 into t. So at t is equals to 5 seconds, the object is taking turn. Okay. So at t is equals to 5 seconds, here the time is 5 seconds and here the time is 0 second. So at this particular time पे velocity will become 0. यहाँ से ये turn लेगा. ठीक है. So what you have to do? You have to firstly calculate the distance in 5 seconds. तो वो हमने already calculate की हुई है. कितनी distance है वो? 12.5 मीटर. So S5 is nothing but 12.5 meter. Now you have to calculate the distance traveled in. अब आपको कितने में पूछा है? t is equals to 6 सेकेंड. अब 5 की तो आपको पहले ही पता है, यानी कि ओनली 1 सेकेंड का यू हैव टू कैलकुलेट. तो वो 1 सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा? t is equals to 5 सेकेंड से t is equals to 6 सेकेंड. ठीक है. So in this case, if you apply the equation s is equals to ut plus 1 by 2 at square. अब रेफरेंसेस बदल जाएंगे यहाँ पे देख. यहाँ पे मैं लिखूंगा u is 0. क्यों लिख रहा हूं 0? बिकॉज एट t is equals to 5 दिस वेलोसिटी विल बिकम 0, और मैं अपना मोशन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से. तो मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी मेरी है, वैसे तो ये फाइनल वेलोसिटी है t is equals to 5, बट t is equals to 5 से t is equals to 6 सेकेंड तक ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. अब यहां से अगर 5 सेकंड से कोई भी मोशन मैं कंसिडर करूंगा, एनी मोशन आई कंसिडर, t is equals to 7, t is equals to 8, so this velocity will treat it as the initial velocity. Initial velocity. Is it clear to everyone? सभी को क्लियर है? यम पर में इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो यहां से ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियली यूटी को 0 मत रख, बट टाइम तो आपको रखना ही पड़ेगा ना. किस टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? तो टाइम 6 - 5, यही तो. 6 सेकेंड से 5 सेकेंड तक. सो 6 - 5 प्लस 1/2 ए 6 - 5 का स्क्वायर. अब देखो आप यहां से आप क्लियर आइडिया ले सकते हो कि एट 5 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी देन, बिकॉज t is equals to 6 is the final destination time, t is equals to 5 is the initial destination time.
तो t इज इक्वल टू 5 पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यहाँ पे 0 है वेलोसिटी, तो तब भी आप यहां से भी कह सकते, तो s विल बिकम 0 प्लस 1/2 माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज -1/2। अब ये -1/2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ना आपको, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी 0। सो देखो कितना है डिस्प्लेसमेंट, 1/2। अब आप देखो टी 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट था, 12.5, और इतना ही डिस्टेंस भी था। अब अगले 1 सेकेंड में 5 से 6 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, -1/2। तो ऐसे 6 में मुझे क्या कर देना है, -1/2 को इसमें ऐड करूंगा मैं, 12.5 -1/2 ऑटोमेटिकली माइनस होगा, सो गिव्स यू 12 मीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अपने आप ही कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज वाई इट इज डिक्रीजिंग द वैल्यू। तभी तो 12.5 से कितना हो गया, 12 हो गया, 0.5 का रिडक्शन हुआ। अब आप बिल्कुल सिंपली बता सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। देखो 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 12.5। अब मुझे ये बताओ कि ये ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, बताओ एवरीवन, देखते हैं किसका दिमाग कितना चल रहा है भाई, ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, यम पर में बताओ। वेरी गुड शिवानंद। श्री लक्ष्मी सोरेंग, जेनवी सोरेंग सिक्किम, यम पर में लिखिता, बताओ भाई सबके सब, संकेत, मिलन, जेनवी रोइंग भावनगर, बताओ ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा। अरे डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर ओनली कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस में क्या होता है, सब ऐड ही तो होता है। तो ये मैं 5 सेकेंड से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर ही तो की है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 5 सेकेंड वाला प्लस ये 1.5 वाला ऑल्सो, सॉरी 0.5 वाला ऑल्सो, है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगी +0.5 विच इज 13 मीटर। क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, रोशन एंड मनीष। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर से करके मतलब आपको होमवर्क है ये। अह, कहाँ पे दूँ आपको ये होमवर्क, हाँ यहाँ पे दे, देखो होमवर्क आपका यही है, आपको जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना वो 6 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन गिवन है वो आपको गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड में व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में भी। ठीक है, क्लियर है। हाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, डू नॉट वरी सोरेंसिक, नोट्स भी मिलेंगे भाई, ये वाले नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, if anyone has any kind of doubt you can stay back to the lecture, otherwise the lecture is being over. Thank you so much for being attentive and being responsive in the class. ठीक है, bye bye, take care of yourself.